ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਟਾਫ ਸਰਜੈਂਟ ਹਾਵਰਡ ਟ੍ਰੈਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਜੈਂਟ ਤਾਹੀਰ ਹਮਈਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you for having us. Thank you. So, Mr. Howard, if you could tell us this program which was started by the Vancouver Police Department, how serious is this issue of mental health crisis, what we are finding in our community, and what prompted the department to start this? Well, it's a priority for our department, it's a priority for our chief and our executive, and it was prompted by a series of incidents that happened throughout the city where we had, people randomly attacked. Mm-hmm. And also the escalating number of contacts that we have on a daily basis with people who suffer from mental illness. Right. Yeah. Mm-hmm. So that was the foundation on which you started this program. Yes. So yeah. when was this started? I became involved in October 2011. Okay. That's when the joint board of the Vancouver Coast Health and the police board and the executives got together and created this collaboration to work together to improve not only the lives of the citizens of Vancouver, but also their family members and people who are suffering from mental illness. Right. So ताहिर साहब, इसमें होता क्या है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, हम हर कम्युनिटी में देख रहे हैं कि इश्यूज़ ये बढ़ते जा रहे हैं, लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेंशन में हैं, और फिर अल्टीमेटली उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो हमें समाज में देखने को मिलती है। तो बेसिकली जैसे हावर्ड साहब ने बताया कि इसकी शुरुआत जो की गई उसका यही था कि कुछ किया जाए कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके और उन परिवारों के साथ। तो होता क्या है इसके अंदर, ये हमें बताइए। ये पार्टनरशिप जो है वैंकूवर पुलिस की और वैंकूवर कोस्टल हेल्थ की असल में काफ़ी देर से जारी है जी। 1984 में पार्टनरशिप पहले फॉर्म हुई थी वैंकूवर पुलिस और वैंकूवर कोस्टल हेल्थ के दरमियान। उसका नाम है कार 87। ओके। सो ये पार्टनरशिप 1984 से चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो एस्केलेटिंग इंसिडेंट्स हो रहे थे वैंकूवर के अंदर, तो हमारे एग्जीक्यूटिव ने वैंकूवर कोस्टल हेल्थ के साथ पार्टनरशिप करके उस मॉडल को एक्सपैंड किया है। सो उसमें जो एक्सपेंशन है उसमें स्टाफ सर्जन हावर्ड ट्रैन इन्वॉल्व हैं, उसमें ये एलाबोरेट कर सकते हैं, उसमें एक्ट टीम्स शामिल हैं। कार 87 का डिफरेंट मॉडल है, जो ग्रोथ हुई है वो डिफरेंट मॉडल है। सो आप कार 87 के साथ इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो लाइक मिस्टर ताहिर टोल्ड अस दैट you are more involved with this program called ACT. So if you could tell us basically what happens, like for example your department has initiated this program with the Coastal Health Authority, Vancouver Coastal Health. So how does it work? Well, that's a model that's been around for a long time. It was created in Madison, Wisconsin about 30 years ago, and it's more of a proactive model than CAR 87. CAR 87 responds to a call after an incident has occurred or is occurring. Right. Whereas with the ACT team, we actually, the goal is to select a cohort of people who are chronic users of the system and who frequent hospitals and go in and out of jails and always in contact with all these systems, and to proactively treat them and manage them before they come into crisis and before we have to intervene and before they are a threat to themselves or others, right? And so we have a caseload. Each team can manage upwards of 80 to 90 clients, and that is their entire job, right? Whereas CAR 87, the caseload changes every day. Right. And so the idea is if you target the 10% utilizing 90% of the resources, then it's being more targeted and more focused, right? Right, okay. And so our team, we have about 12 full-time positions, including the police officer, which is what's unique about what we're doing. Even though it's been around for 30 years, no other agency other than us in Victoria really have the police officer embedded into the team. Okay. And so the team members meet every day and go through all 80 clients and,
if client A is decompensating and not doing well, then we go out and do outreach. Okay. You know, and then we move on, and we basically touch base with everybody, and we do on average about 3 contacts a week with our clients. Right? Okay, so it's a constant kind of interaction with them, and you motivate them and keep them on track. Yeah, exactly. Okay. Very intensive. Make sure they're on their medication, they're doing okay, all their needs are being met right before they decompensate. We don't want to reach that point. We want to be proactive. Okay. Yeah. So ताहिर साहब जैसे ये है इनका प्रोग्राम एक्ट, आपका कार का बता रहे थे, वो क्या है, उसमें क्या होता है? उसमें ये है जी कि कार 87 में एक पुलिस ऑफिसर और वैंकूवर कोस्टल हेल्थ की साइक नर्स पार्टनर करते हैं और 7 days a week काम करते हैं from 7 in the morning till 3 a.m. in the night. Okay. और जो भी कम्युनिटी में सिटीजन है जो कि who is in need of a psychiatric assessment, तो वो ऑन साइट अटेंड करते हैं और इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी तो उसको एप्रीहेंड करके हॉस्पिटल ले जाएंगे या उनको सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें. सो डेली बेसिस पे कम्युनिटी दो मेंटल हेल्थ इमरजेंसी सर्विसेज की ऑफिस डायरेक्टली फ़ोन कर सकती है या फिर डायरेक्टली जो 911 के थ्रू ई-कॉम के थ्रू जो कॉल्स आती हैं कार 87 उन सब कॉल्स को रिस्पॉन्ड करती है. सो उसके अंदर क्या कोई जिसको ज़रूरत है वो उस समय ये मांग भी कर सकता है कि मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत है? बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. वो अगर खुद उनको इस आगाह हैं अपनी बीमारी से तो वो खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे 911 पे कह सकते हैं कि भाई आई नीड सम हेल्प एंड डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली गो. बिल्कुल. ओके. अच्छा, इसमें ये बताइए कि ओवर द इयर्स आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या ये कांस्टेंट है कॉल्स का चक्कर या बढ़ रहा है लोगों की जब हम बात करते हैं ओवरऑल क्या है स्टैटिस्टिक्स क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं? ओवरऑल द मेंटल हेल्थ कॉल्स हैव बीन ऑन द राइज. ओवरऑल जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है इवन द डायरेक्ट एडमिशंस टू द हॉस्पिटल्स हैव बीन ऑन द राइज थ्रू इमरजेंसी एज वेल एज जो पुलिस के थ्रू कॉल्स आती हैं दे आर ऑन द राइज. आवर एप्रीहेंशंस जो हम लोगों को मेंटल हेल्थ एक्ट के मातहत एप्रीहेंड करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं दे हैव बीन ग्रोइंग एवरी ईयर एज वेल. ओके. Now, Mr. Howard, if you could tell us that is it just confined to the east side, because generally we hear that that area is a different area. So tell us a little bit about this. Like you said, you're in constant contact with your clients, and it's a constant battering, motivating them to make them on track, keep their medicines. They should have it and all that. And also, of course, you are interacting with them and trying to make them good citizens, actually. So basically, is it just confined to that particular east side, or it's all over Vancouver? It's not confined to the east side, but it is a large percentage of our connections and contacts and clients do reside in the downtown east side. So, but it's a citywide problem. It's not just a downtown east side problem. Although the downtown east side does figure prominently in the work we do because many of our clients do reside there or are from there, and many of our clients do suffer from severe addiction and mental illness, right? And so. The reality is a lot of the service providers and low barrier services and housing and are in the downtown east side, so it's almost like a natural gravitation down there. We know that a quarter of all our mental health apprehensions occur in the downtown east side, which is it's a very small area compared to the rest geographically compared to the rest of Vancouver. But it takes one of every 4 apprehensions occurs there, and 1 out of every 4 call that has a mental health factor occurs in that area. So it's a very concentrated, population area. Yeah. But if I could just elaborate on that, just so that it doesn't confuse the matter, though a lot of the people that are mentally ill end up living in these areas due to the resources available and the low-income housing available. At the same time, this illness afflicts people across all communities, across all professions, across all ages, and it is an illness that most of us will know somebody that's afflicted with this illness. We'll go for a short break, come back and ask as to what can the community, how can the community play a role in this? What can they do? And apart from that, you also have a section whereby you focus on the youth also. So we'll go for a break, come back and learn a little bit more about what all other programs are being run by your department. Sure. सो स्वागत है जी एक बार फिर आप सब का आज दे इस प्रोग्राम में मेरे नाल साथ दे रहे ने वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट तो आए हुए साढ़े 2 मेहमान
ਸਟਾਫ ਸਰਜਨ ਹਾਵਰਡ ਟਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਤਾਹਿਰ ਹਮਾਯੂੰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਈ ਰਾਹ जो है उन्होंने देते हैं। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने। सो ताहिर साहब, आप यूथ सेक्शंस का जो डिपार्टमेंट है उसको भी डील करते हैं, उसके बारे में बताइए क्या प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं कि हम अपने यूथ को जो है वो सही रास्ते पे रख सकें, ये ड्रग्स और क्राइम से बचा सकें। So Vancouver Police it has a dedicated section toward youth, Okay. and we have a car called Yankee 20. इस कार ये भी कम्युनिटी मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप है जी। और इस कार में ये उन यूथ को रीच आउट करते हैं जो इस वक्त ऐसी लाइफस्टाइल में गुजर रहे हैं जो ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन और इस इन डिपेंडेंसीज की वजह से जो एडल्ट्स हैं इन यंग यूथ they are taking advantage of them. Right. So the objective of this car is to intervene in the lives of these youth and provide them with resources, Right. so that they can be moved into a healthy lifestyle choice. Okay. As well, we also have an enforcement car. Right. वो Yankee 10 है, उसमें भी probation officer के साथ partnership होती है, again with the ministry. Right. और इसमें वो enforcement car है जो court conditions impose किए होते हैं. This car makes sure that they're following all these conditions. As well as that, we have a youth squad that investigates files and school liaison officer. Okay. And we're reaching out to the youth and trying to engage them in conversation so that we can influence them. Right. So these programs, what kind of impact are they having? You have been observing, going and meeting those people, and as Mr. Tahir also mentioned that some of the programs going to the schools and universities and talking, interacting with the youngsters. So what impact is it having? I think you're in a better position to respond to that. Yeah. So it's a continued. The idea is to keep this dialogue open with the youth. Right. The idea is to make sure that if a youth is reaching out to us, that we're available to them. Right. And if through our efforts we can even save one youth, it would be a great success. Right. Currently, the VPD is undertaking a new program known as the Cadet Program, Okay. in which we're going to be inviting youth from, I believe it's going to be from grades 9 to 12, Okay. and engage them in programs. Right. Something like the Air Cadets and the Army Cadets kind of thing. It would be along On those lines. similar lines, Along okay. those lines. Right. 9 to 11. Okay. Grades 9 to 11. Okay. As well, we've got several programs where we go and do presentations to Right. youth about the risks of gang life. Mhm. And we get positive feedback from them. Right. So in the long run, like I said, if we can influence a few kids to see the message that we're trying to pass on to them, that would be a success. Right. And Mr. Hubbard, with your program which you are running, you interacting with the people which you mentioned before, over there, what is the kind of interaction, and are the people having those positive vibrations, if I may say, that they are understanding the message what you're trying to give to be out of this system? Oh, absolutely. Yeah, we get, we've done some studies and reports, and the results are very positive, and that's why we've expanded the program from originally 1 ACT team to now 5 ACT teams, and Right. we've got our health partners investing in this program because it works. And there's actually lots of literature. I told you earlier that the ACT program had been around for 30 years, so there's tons of literature Right. that point to positive outcomes for health and et cetera. And one of the things that it never had addressed was the criminal justice factor outcomes, which were Okay. always found to be sort of negligible. But because we now have the police embedded in the team, Right. our results are actually quite positive. We're seeing about 50% reductions in most categories. Oh, wonderful. Reduction in criminal justice involvement, so charges and convictions. Right. Reductions in people being victimized, the clients themselves, and also, reduction in hospitalization, Okay. Negative police contacts, improved health outcomes as far as primary health. And so yeah, there's lots of positive results that have come out of these. Right. Out of आप क्या this. समझते हैं कैसे कम्युनिटी जो है वो अपना योगदान डाल सकती है अपने आप को इन्वॉल्व करके प्रोएक्टिव होकर, क्योंकि आमतौर के ऊपर जो हमारे आसपास आज चल रहा है हम उससे चिंतित बहुत हैं, वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट इट,
और जब बात आती है कुछ अपना योगदान की, उसमें हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं जब पुलिस की बात भी आती है। तो नो डाउट एक तो हमारे ख़ास तौर के ऊपर साउथ एशियन कल्चर की जब हम बात करते हैं, तो जिन मुल्कों से हम आए वहाँ पे पुलिस की फंक्शनिंग कुछ और किस्म की थी और यहाँ पे कुछ और है। पर वो एक जो गैप था वो शायद हमारे दिमाग में बैठा हुआ और हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। डर होता है या कुछ मिथ्स हैं कि यार पुलिस ये कर रही है, हम क्या करें, अगर हमने आगे आए तो हम ही ना फंस जाए। सो यू नो थिंग्स ऑफ दिस काइंड अभी भी हमारे लोगों में बहुत ये प्रिवेलेंट है। तो आप क्या महसूस करते हैं विद योर एक्सपीरियंस इन पुलिसिंग, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि हाउ कैन द कम्युनिटी ऑल्सो बी प्रोएक्टिव? एक पुलिसिंग का बेसिक प्रिंसिपल है जो सर रॉबर्ट पील ने कहा था बहुत साल पहले कि द पुलिस आर द पब्लिक एंड द पब्लिक आर द पुलिस। सो कनाडा में जो पुलिसिंग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द पुलिस आर अकाउंटेबल, और जब पुलिस आपके साथ इंटरेक्ट करती है, द पुलिस का जो रोल है दैट इज़ टू रिप्रेजेंट द पब्लिक। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी इस बात को रियलाइज़ करें कि यहाँ पे जो पुलिस मॉडल है वो इंडिया या पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के पुलिसिंग मॉडल से बहुत फ़र्क है। और द ट्रस्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पुलिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल Absolutely. in the fight against crime, and as well as in the influence of the police officer in the youth's life. So the public should not be afraid to interact with the police, or police, Vancouver Police is always trying to reach out to the communities as well and establish a good relationship with them. Wonderful. It was a pleasure having both of you. Thank you for informing us about the programs which are being run, which are being beneficial to the public. Thank you and best wishes. It's our pleasure. Thank you for having us. Thank you. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਵਰਡ ਟ੍ਰੈਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਵਰਡ ਟ੍ਰੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਰ ਪੀਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।